Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. AgriGyaan. In previous classes, we have studied about different clay minerals and what are the different properties of these clay minerals. Today, we'll be studying about how to identify these clay minerals. तो जो पहला प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देख रहे हैं that is shape. तो shape is basically studied by use of electron microscope. By use of this electron microscope, we can know what is the shape of different clay minerals. जैसे कि केओलिनाइट का जो शेप दैट इज होता है दैट इज हेक्सागोनल टाइप एंड इट इज ऑब्वियसली प्लेट लाइक बिकॉज ऑल फाइलोसिलिकेट्स आर दीज आर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका. तो जो केओलिनाइट का होता है दैट इज बेसिकली हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर एंड और एक मिनरल है जो कि सेम 1:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल को बिलोंग करता है दैट इज हेलोइसाइट. सो हेलोइसाइट बेसिकली इज हाइड्रेटेड केओलिनाइट. इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ केओलिनाइट बट हैज अ वाटर लेयर इन बिटवीन द टू लेयर सिलिकेट. तो वाटर लेयर इसमें रहता है. सो इसका जो बेसिकली स्ट्रक्चर रहता है इसका स्ट्रक्चर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है. ट्यूबुलर स्ट्रक्चर केओलिनाइट का रहता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एंड इन केस ऑफ हेलोइसाइट इट इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. एंड इफ वी टॉक ऑफ अदर मिनरल लाइक इलाइट, माइका और इलाइट का अगर बात किया जाए तो इसका फ्लेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक लाइक स्ट्रक्चर. एंड इफ वी टॉक ऑफ मोंटमोरलाइट विच इज बेसिकली एक्सपैंडिंग टाइप ऑफ 2:1 क्ले मिनरल, तो इसका फ्लफी स्ट्रक्चर रहता है. फ्लफी सो बिकॉज इट इज एक्सपैंडिंग टाइप so it has a fluffy type structure which is liable to get expanded. ठीक है. तो शेप का बात अगर किया जाए so shape can be characterized by use of electron microscope. So the next property is chemical composition. So chemical composition में अगर बात किया जाए तो सबसे पहला चीज जो आता है that is silica to sesquioxide ratio. So if we talk of kaolinite, that is a 1:1 type of clay mineral. Silica sesquioxide ratio is very less, that is less than 2, and rest of the mineral that is elite montmorillonite have a silica sesquioxide ratio of greater than 2. So ये kaolinite, that is why this is found in very highly weathered environment, basically in laterite and lateritic soil. जो laterite and lateritic soil which are very highly oxidized, which are very highly weathered soil, तो यहाँ पे केओलिनाइट का डोमिनेंस देखा जाता है. एंड ऑब्वियसली laterite and lateritic soil they have also silica sesquioxide ratio of around 2 and even less than 2. So apart from silica and sesquioxide ratio, other chemical composition like percent K2O content, this also decides what type of mineral is present in the soil. तो जैसे माइका का अगर देखा जाए कि उसमें 10% K2O 10% K रहता है. एंड इफ वी टॉक ऑफ इलाइट which is basically hydrous mica, तो उसमें the percent K content is 6 to 8%. and which subsequently decreases to vermiculite. उसमें और भी कम पोटेशियम कंटेंट रहता है. सो मैग्नीशियम कंटेंट भी हम we can also judge the mineral by estimation of magnesium content. So these are the various chemical composition of clay mineral by which we can differentiate which type of mineral is present in soil. Apart from that, specific surface area is also playing a major role. हम यहाँ पे surface area नहीं बोल रहे because generally surface area is meant to be calculated for a 2D surface, but we know that clay and soil particle is a 3D surface and we need to assess the specific surface area of these type of particles. तो specific surface area अगर बात किया जाए तो so we calculate it by 2 or 3 means. जैसे कि हम यहाँ पे एरिया पर यूनिट वेट ले सकते हैं या फिर एरिया पर यूनिट वॉल्यूम भी ले सकते हैं. तो यहाँ पे जैसे कि हमने लिया है कि एरिया पर यूनिट वेट. सो स्पेसिफिक सरफेस एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स. जैसे कि इथिलीन ग्लाइकोल ईजी हम यूज कर सकते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल मोनोइथाइल ईथर EGME हम यूज कर सकते हैं, या फिर CPB हम यूज करते हैं, सिटाइल पाइरिडियम ब्रोमाइड. सो इन एग्जाम आपको 3 ऑप्शन दिया जा सकता है एंड द 4th ऑप्शन माइट बी ऑल ऑफ द अबव. तो जनरली इथिलीन ग्लाइकोल हम पढ़ के रखते हैं. सो not only ethylene glycol, apart from ethylene glycol, these 2 other reagents are also used so as to measure specific surface area of a clay mineral.
सो वहां पे आप ऑल ऑफ द अबव मारोगे, ठीक है। सो these three reagents are used for basically these three reagents are used for measurement of specific surface area। तो इसमें हम after this let us know about what is the maximum what is the clay mineral that is having maximum internal specific surface area। तो specific surface area अगर देखा जाए तो जैसे हम यहाँ पे we see this clay mineral, तो ये इंटरलेयर स्पेस अगर इसे हम बोलेंगे तो उसका एक्सटर्नल सरफेस एरिया भी एक है, and it has got an internal surface area where various cations interlayer cations and as well as water is also withheld। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनल सरफेस एरिया, तो इस मिनरल का सरफेस एरिया एक एक्सटर्नल सरफेस एरिया भी हुआ एंड एक इंटरनल सरफेस एरिया भी हुआ। तो इफ वी से इफ वी टॉक ऑफ mineral having clay mineral having highest internal specific surface area, then the answer will be montmolonite, and if it has asked the clay mineral having highest external specific surface area, it will be vermiculite, and total surface area अगर बात किया जाए, so the answer will be montmolonite। So apart from specific surface area, ion exchange is also another important property which decides which type of clay mineral is present in soil and which also decides the fertility of the soil। So ion exchange can be of two types, cation exchange and anion exchange। So depending upon this fertility of a soil is also judged। तो यहाँ पे these are the various clay minerals that have been mentioned here and उसका cation exchange capacity यहाँ पे mention किया गया है, तो आप यहाँ से इसका डेटा ले सकते हो। So cation exchange capacity has unit of centimole proton per kg, ये प्रोटॉन है, so centimole proton per kg। So cation exchange capacity आप यहाँ से इसका डेटा आप जज कर सकते हो।